So let's start. So today's topic will be the SAP script. So hierarchical, whatever the report will be there, that we'll do in the regular sessions. Okay, so SAP script. SAP script, what exactly it is? It is just used for the layout generation. Hmm? So what are the layouts? Whatever you do the prints, right? In purchase order, sales order, invoice, जो भी आप print निकालते हो तो print निकालने से पहले उसको print layout design करना पड़ता है. So layout designing हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं. So general layouts, what you can say that PO layouts, sales order layouts, invoice layouts, JR layouts, and delivery notes. Okay, so different layouts are there. So we can design under SAP script and smart form. So both are used for the same purpose. Only this difference is what this is, you can say oldest and this you can say the newest one. Okay, SAP script as 4.7 SAP version that was used to SAP script, and after that 6.0 EC 6.0 onwards all the applications they have used smart forms. Okay, so SAP script, first of all we'll see it. So there is the T code SE71 for SAP script, and whatever the logic you will write, that we can say it's called a driver program. जो भी आप logic लिखोगे, code लिखोगे, so that place is called the driver program, and the stick code is SE38. And when you will execute this code, the output you will get in this printer. Okay, so output device would be the printer, and default SAP system have LP01. Okay, now just test purpose, SAP have solution LP01 is a printer. If you have installed really that Samsung, LG, whatever the printer is, the printer name will show. But अभी अपने system में LP01, it's a name as a dummy. It's, you can say it's a printer, and using, you can check out the print layouts and print test. You can do it. Okay. So first of all, we have to do these things to design the layouts, and after that we have to write a code, and then finally we can see the output over here. Okay, so let's see first SAP script design. What are the components? The components are page. First of all, we have to create a page component. After that, window, then page window, the next is paragraph and characters. These are the main components, as well as there are two administrative points are like, first is basic setting and administrative. I will show what exactly it is. Main thing is this one, page windows and page window and paragraphs and characters. What we have to do it, creating the smartphone script. First of all, we have to create the page, this one part. After that window we have to create. When you create this window, it look like this. Suppose if you want to three different windows, if you want, you have to take this pen. When you create this window, initially it will display like this. After that we have to set that location or positionize that where should be that window be, you can decide. So the first window I want to keep in this footer section. Where we can do this we can do in the under the page window. पेज विंडो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसका पोजीशन दे सकते हैं, ये कहाँ पे विंडो सेट होना चाहिए.
Second, I want in the middle, and one more should be in the first header line, you can say. Double click, will you just change the color. ये अपना header is the body and footer section. So three windows we have to, and that also be inside in the header section, middle and last. All things we can do under the page window. In the page window, we have to give the position, left margin, upper margin, width and height. All things we have to give there. Next, windows. When you create initially, that looks like the earlier I have shown you. Okay, when you create this window, it will display like this one. But after the window creation, you have to go in page window and you have to set it. And next is paragraph. अगर आपको कैरेक्टर्स डिस्प्ले करना है, यहाँ पे मुझे टाइटल लिखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है, व्हाट इज दिस, इनवॉइस, या कंपनी नेम आपको लिखना है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इज द कंपनी नेम, right? So all the font form, we can say the font size, font style, bold, italic, everything you can do on the paragraphs. यहाँ पे हम बड़े टेक्स्ट चाहिए, so you have to increase this font size, and in the middle section default the 12 character size would be the characters. So you have to create one more paragraph and you can apply, you can create first and then you can apply it here in the mid section, and last one characters. अगर आपको बारकोड्स या सुपर सब कैरेक्टर्स क्रिएट करना है, आपको बारकोड शो करना है आपके पेज लेआउट पे, तो बारकोड सेक्शन हम कैरेक्टर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. So there are majorly 5 components are there in SAP script. We have to create first and we can implement it. So basic setting administrative point में क्या होता है कि पेज फॉर्मेट कौन सा चाहिए, ओके, और डिस्प्ले में आपको किसने ये बनाया है, उसका टाइम, डेट, एवरीथिंग विल बी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव. एंड बेसिक सेटिंग, default paragraph and default page we have to pass over there in the basic setting. After that, in the driver program, what we have to do, we have to use function models. Those are like open form first, second is write form, second function model, and third is a close form. Three function models we have to use. And suppose if you have n number of form pages, then we have to use one more, that is called the start form. Okay, so when we have single page, no need to use this. Open, write and close, this we have to use, and rest of all the logic we have to continue, like get the data from database. Okay, and you have to use the text element. Using text element we can pass the data on the layouts. Okay, so that we are going to do, but it is what, it is a driver program we can call. In the driver program we have to write a logic. And the open form, what we say here, we tell this system open the session, have to tell only the name of form. Okay, name of form you have to say. And here in the right form we have to give the text element. जैसे हम हाइड में जो वर्क करके वैल्यू रखते थे, यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट कंसेप्ट है. सो टेक्स्ट एलिमेंट एंड विंडो नेम वी हैव टू पास इट. इफ यू हैव multiple windows, then multiple times we have to call the write form. The last is the close form. The close, however, we when we open form call, it means it's open the session, and when we have to close, then we have to use close form. ओपन जैसे करते हैं तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा. सो ओपन फॉर्म एंड क्लोज फॉर्म इज जस्ट फॉर ओपन द सेशन एंड क्लोज द सेशन. एंड मिडल पार्ट इज राइट फॉर्म, where we have to pass text element and windows name. What are the type of windows? The type of windows are windows type, variable window, constant window, graphic window, then last is main window. Main is a default and only once we have to use this. We cannot create multiple main windows, only one, and that is a default as well, and this once is there, and rest all are variable window, constant, graph, you can.
वेरिएबल विंडो मल्टीपल टाइम्स हम ले सकते हैं। कांस्टेंट फिक्स कंटेंट जैसे कि एड्रेस, एड्रेस फिक्स है तो आप कांस्टेंट उसमें आप यूज कर सकते हैं। ग्राफ लोगो यूज करने के लिए आप टेक्स्ट इन ग्राफिक यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ग्राफिक सेक्शन। इज इट क्लियर साइली? Yes, sir. सुशील? So for n number of forms, what function module is used? विच वन? For n number of forms, राइट फॉर्म। right? ओके, अपने पास तीन अभी यहाँ पे विंडोज है। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एलिमेंट बनाऊंगा हेड करके, यहाँ पे मेन करके बनाऊंगा, फुटर करके बनाऊंगा। ठीक है, तो उससे क्या होने वाला है कि जो भी हम यहाँ पे ड्राइवर प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी हमें स्क्रिप्ट डिजाइनिंग करते हैं, तो टेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा। वी हैव टू गिव द नेम, लाइक हेड मैंने लिख दिया उसका, तो यहाँ पे स्लैश ई करके जैसे भी हमने वहां पे नाम दिया है उसी को यूज करना पड़ेगा, हेड। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी हमने लॉजिक लिखा हुआ है उस विंडो में क्या दिखाना है, वी हैव टू डिसाइड एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू राइट द विंडो नेम। किस विंडो में क्या दिखाना है? फर्स्ट विंडो में मुझे डेटाबेस में जो कस्टमर के डिटेल्स है या वेंडर के डिटेल्स है वो मुझे शो करना है हेडर सेक्शन। सो वी हैव टू यूज अ हेड विंडो एंड देयर आई कैन डिस्प्ले द वर्क वैल्यूज इन द हेडर। मेन एरिया में आइटम डिटेल्स मुझे शो करना है। मेन में आओ, मेन एलिमेंट लिखो और मेन में जाके स्लैश ई मेन, देन यू कैन राइट वर्क वैल्यूज। बट आइटम में क्या होता है कि मल्टीपल आइटम्स होते हैं या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे, राइट? सो डायरेक्टली यहाँ पे हम आई टैब से डेटा वहां पे प्रिंट नहीं कर सकते, सो वी हैव टू यूज लूप स्टेटमेंट। तो राइट स्टेटमेंट जो रहेगा, वो राइट स्टेटमेंट आई मीन टू से राइट फॉर्म ये जो रहेगा लूप में डालना पड़ेगा। लूप एट आई टैब into work area. After that, we have to write right form and the text element name आपने लिखा है main window name। main में अगर आपको ये डेटा शो करना है, 4 parameters are there, those all we have to pass it। window का नाम भी main है, then function set body। ये जो दोनों आपको दिखाता हूँ, बट मेजरली है टेक्स्ट एलिमेंट एंड विंडो। टेक्स्ट एलिमेंट का नाम भी मेन है और विंडो का नाम भी मेन है। ठीक है, सो उसके बाद मुझे लिखना है एंड लो। आई विल शो यू दिस कोड हाउ टू डू इट, बट मुझे यहाँ पे यही बताना है कि ये सेकेंड विंडो में मुझे मेन के अंदर जो भी वैल्यूज है, मतलब वर्क एरिया में जो भी वैल्यूज रहेगा वो अगर प्रिंट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, गेट इन द वर्क एरिया एंड दिस डेटा विल बी वी कैन शो, वी कैन डिस्प्ले ऑन द मेन विंडो। ठीक है, हेड के लिए अलग हो सकता है, हेड के लिए दूसरा फॉर्म हम यूज करेंगे राइट फॉर्म, उसमें जो भी वर्क एरिया का वैल्यू हमने फेच करके लाया हुआ है वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द टेक्स्ट एलिमेंट। Okay, so whatever we are data fetch from the database table and we have brought from table and we have to display on this layout, how we have to do, we have to use text element, using text element we can display on this layout। ठीक है, तो अभी ये ड्राइवर प्रोग्राम ये इसका पार्ट है और ये लेआउट का पार्ट। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं इस चीज का। SE38 Y script program executable बस बनाएंगे। After the creation of this jar program, we have to navigate on this new window, that is the SE71, and there we have to write name of form and just create it. This is administrative data and basic setting. We have to write information, this meaning what? Invoice format.
When you have to activate, you will get automatically created on change on time and all basic information you will get it. This basic setting यहाँ पे पेज फॉर्मेट होते हैं, जैसे पेज A4 A6 जो भी फॉर्मेट्स का पेज चाहिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं. पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. पोर्ट्रेट एंड वर्टिकल and landscape means horizontal, right? And this is the default sizes of lines and characters per inches on this all pages. If you have multiple pages, then you have to give the which page should you call first. Default page you have to write here in this place, and paragraph, default paragraph also is required. And this is the again is the basic information about the font family, font size, and it will apply whole स्क्रिप्ट जो भी हम मल्टीपल पेजेस बनेंगे सभी के लिए अप्लाई होगा डिफॉल्ट इसमें. After that we have to go in the pages section. First of all, as I said, you have to create a page. आपको पेज बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम विंडो बना सकते हैं. How to do it? You have to note down these steps. Every time this option may change. Now it is not showing us page. All options are visible. When we are in the page cell, it will not show us this button. You have to do create invoice, my invoice format. फर्स्ट इनवॉइस, नेक्स्ट इनवॉइस, मतलब अगर दूसरे पेज है तो दूसरे पेज का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं. इफ इट इज वन देन यू हैव टू राइट नेम, सेम पेज का नाम वहां पे डालना पड़ेगा. नेक्स्ट इज आफ्टर पेज क्रिएशन वी हैव टू गो इन द विंडो सेक्शन. सेकंड कौन सा है? विंडो है. तो विंडो को क्लिक करो. यहाँ से भी हो सकता है, बट एवरी स्टेप if you follow standard, go in the edit menu, create this element right here, head, एक छोटा सा डिजाइन कर रहे थे हमें कैसे बनाना है. मुझे ऐसे एक पेज बनाना है और यहाँ पे उसका नाम जो टेक्स्ट क्या होता है, टैक्स इनवॉइस से लिखेंगे. इसके बाद फिर लेफ्ट साइड पे कस्टमर इंफॉर्मेशन, यहाँ सोल्ड टू पार्टी, सोल्ड टू पार्टी. यहाँ पे पीओ के डिटेल्स लिखेंगे. सॉरी, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, invoice date, invoice date, and if you want that barcode also we can display. And this is about all about this party information. एड्रेसेस अगर है तो एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे. शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, आइटम डिटेल्स यहाँ पे दिखाएंगे. आइटम टेबल, द लास्ट, फोटो सेक्शन में एड्रेस दिखाएंगे. इस तरह से हमें कुछ फॉर्मेट्स चाहिए. सो लेट्स वी डू इट. फर्स्ट टैक्स इनवॉइस, sold to party,
customer information. Next is invoice details. Invoice. Next is address. ये जो मेन है, इस मेन को हम करेंगे item details. The last footer, create element, company, कंपनी का जो एड्रेस है, अगर आपको कांस्टेंट लिखना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट रखना है तो यह है कांस्टेंट, ठीक है, फिक्स रहेगा ये. Rest all are variables and one is main. Is it clear? Yes, sir. Next part is paragraphs. Click on the first of all do page windows. पेज विंडोज में जाके हम इसको सेट करेंगे सब वन बाय वन. क्रिएट एलिमेंट फर्स्ट है ये टी ट्रैक्स. ये कहाँ पे होना चाहिए? ये लेफ्ट मार्जिन आपको बताना पड़ेगा. लेफ्ट मार्जिन कितना रखना है? टोटल इसका साइज है 21, पेज का विड्थ है 21, तो ये मुझे यहाँ से मान के चलते हैं 7 into 7 14 and 21 is 41 कितना होगा? 21 minus 14 7. हाँ, तो ये अपन 7 इसको 7 लेफ्ट मार्जिन, विड्थ उसका रखते हैं 7, अपर मार्जिन 0 and height 2 centimeters. Immediately you can do it. Check page layout. आ गए यहाँ पे, और उसको थोड़ा सा नीचे लेना है, अपर मार्जिन आप लिख दो, पेज लेआउट 01. Default printer, right? As I said here, it's a default printer. Here LP01. देख लेना आपने, वो थोड़ा सा नीचे आ गया था. नेक्स्ट हमें बनाना है सोल्ड टू पार्टी इनवॉइस का डिटेल्स. सोल्ड टू पार्टी कस्टमर इंफॉर्मेशन, लेफ्ट मार्जिन 0, इसका अपन 50 कर लेते हैं, मान के चलते. वेट इसका 10 कर लेते हैं. अपर मार्जिन, अपर मार्जिन अब क्या करना पड़ेगा? इसका जो हाइट है, या हाइट प्लस थोड़ा सा एक सेंटीमीटर का स्पेस देंगे तो नीचे आ जाएगा. 2 लिखा था हमने इसका हाइट, अब इसके लिखते हैं 3 अपर मार्जिन, हाइट उसका रखते हैं 5. ठीक है. लेंथ कितना होगा सर? 21 हाइट कितना होता है उसका? लिखा है ना कितना, किसका? पूरे पेज का जो वेट वेट तो 21 है. हाँ, हाइट कितना होगा उसका? 27 तक है. 27. डिपेंड ऑन पेज साइज अपने. N4 का ही था. अब है ठीक है, कस्टमर की बात नेक्स्ट बनाएंगे. कौन सा? कंपनी एड्रेस, एड्रेस लेफ्ट मार्जिन. अब बताओ इसका लेफ्ट मार्जिन कितना देना पड़ेगा? ऑलरेडी हमने ये लेफ्ट को ले चुका है, ये लेफ्ट मार्जिन इसका 0 रखा है. ओके, तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा विंडो. हाँ, विड्थ उसने कितना रखा है? 5 है, तो वहां पे 21 माइनस, ओके बहुत ही कम नहीं नहीं 10 लिखा है ना विड्थ उसका. हाँ 11 सेंटीमीटर. हाँ, तो अपन क्या कहते हैं 10 देते हैं. 11 तक.
ओके हाँ 11 राइट, 11 से 10 ही रखते हैं, उसके बाद इसका रखते हैं 10, 1 सेंटीमीटर इधर उधर। अपर मार्जिन सेम, कितना 3, हाइट सेम 5, एग्जैक्ट ऐसे ही चाहिए ना हमें, तो इस तरह से हम फॉलो कर रहे हैं कि ये विंडो और ये विंडो दोनों का साइज सेम रखें। The next is invoice main, लेफ्ट मार्जिन 0, फुल विड्थ रखते हैं उसका 21, अपर मार्जिन दोनों का हाइट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तीनों का। हाँ दो दो राइट, कितना बनेगा? सर 2 इसका 3 5 हाँ 2 एंड सेकंड इसका 5 है, 7, 7 प्लस और 2-3 सेंटीमीटर हम ज़्यादा देते हैं, 7 प्लस 10 करेंगे, नहीं 7 प्लस 2 9 कर देते हैं। देन हाइट इसका रखते हैं 10। चेक लेआउट, सारी समझ आ रहा है ना? हाँ सर। ये थोड़ा सा ऊपर लेंगे, टैक्स इनवर्स को, टैक्स टाइटल, अपर मार्जिन उसका निकाल देंगे। हाँ ये लेफ्ट मार्जिन है, इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कस्टमर एड्रेस, कस्टमर थोड़ा सा स्पेस आ गया यहाँ पे, ये आ रहा है तो इस जगह लास्ट है फुटर वाला, यहाँ फोटो कहाँ तो दिखाएंगे। एडिट, क्रिएट एलिमेंट, फुटर, कंपनी एड्रेस, इनवाइस डिटेल्स, एड्रेस हमें और रख लिया। ओके ये यहाँ पे चाहिए। हम्म, ठीक है, वो जो एड्रेस है यहाँ पे हमें चाहिए, ये इनवाइस डिटेल्स ऊपर चाहिए। इसका हम पोजीशन चेंज करते हैं, एड्रेस का लेफ्ट मार्जिन रखते हैं 0, विड्थ पूरा रखते हैं, कितना रखेगा, 2 हो चाहिए, थोड़ा सा कम लेते हैं अपन, लेफ्ट से 15 है ना। अपर मार्जिन ऊपर से कितना होगा अभी, 5 एंड 2 7 है। अपर मार्जिन हाइट उसका रखते हैं 3 सेंटीमीटर, और इनवाइस का डिटेल लेते हैं। इनवाइस लेफ्ट मार्जिन इसका है 11, विड्थ उसका है 10, अपर मार्जिन 3, हाइट इसका 5। पेज लेआउट चेक, ये थोड़ा सा और नीचे लेना पड़ेगा। मेन विंडो, मेन कहाँ है, अपर मार्जिन इसका कितना बना, उसका 3 4 4 से बढ़ा के देखते हैं। शिपिंग एड्रेस का जो हाइट है अभी थोड़ा सा कम करते हैं। लेआउट, अपर मार्जिन हमने कम किया ना, मेन का वो बढ़ाना चाहिए। अपर मार्जिन हाँ कितना, टैक्स का हाइट कितना है 2, कस्टमर का कितना है 5, उसका एड्रेस का कितना है 2, 7 8 9,
Just write this. इसको भी थोड़ा सा नीचे रहना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा ऊपर मार्जिन इसका हम बढ़ाते हैं। छोड़िए, आणि एड्रेस जो है अपर मार्जिन इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसे बढ़ा दिया। उसका हाइट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एड्रेस दिखाएंगे, उसके बाद फिर लास्ट फुटर सेक्शन है। मार्जिन 0, विड्थ 41, अपर मार्जिन बताओ, हाइट कितना रखा है इसका मेन का, हाइट इसका 10 है। 10 प्लस अपर मार्जिन कितना है इसका, 14 है, 24 हो गए। 24, 26 अपन देते हैं, 70%। ठीक, अब next part है paragraph parameter. After this page window, we have to go in the paragraph formats and we have to create it this default. Default para. इसमें हम font style अगर देना चाहते हैं तो font को क्लिक करो, then font family select करो. These are the options. Select one. Font size default कर लगते हैं. Next, edit. Title courier, इसका साइज रखते हैं 22, bold. Then next time table title, table header, table header, table header का font टाइम्स लेते हैं, टाइम्स रोमन, साइज के 12, बोल्ड. जस्ट सेव इट. अब ये टैब्स में जाके जैसे हम कैरेक्टर पोजीशन देते हैं ना कॉलम क्लासिकल और इंटरेक्टिव रिपोर्ट में, तो ऐसे में यहाँ पे ये बताना है कि टैब पोजीशन बताना है. सो इनिशियल रिसर्च फर्स्ट कैरेक्टर्स डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अलाइनमेंट. फर्स्ट कॉलम यहाँ पे दिखना चाहिए. आइटम नंबर डिस्क्रिप्शन आफ्टर 10 characters, what would happen, second field should be displayed, there is a description, character size and write the center one. थर्ड है, मान के चलते 30 साइज इसका डिस्क्रिप्शन का है, 10 प्लस 30, 35, 40, 45, 45 कैरेक्टर्स के बाद दिखना चाहिए क्वांटिटी. हर एक का साइज देते हैं 10, 10, इनिट प्राइस, just say. After this we have to create TV table values, same for it again, times लेंगे, want to be 10, ठीक है 12, bold नहीं करेंगे, as it is रखेंगे. then tabs इसमें लिखते हैं first characters के बाद फर्स्ट कॉलम का वैल्यू दिखनी चाहिए, 11 कैरेक्टर्स के बाद
description. Got this concept? Header and item values वहाँ पे डिस्प्ले TT and TB ये हमने बनाया. Next, character formats. So for character formats, we have to create the characters that you can say barcode. And इस barcode में जो standard codes है वो हमें use करना है. C1 just save it. Save. और हमें कुछ ऐसे लिखना है जैसे जनरली वर्ड्स में लिखते हैं ना, एनडी अर्थमेटिक्स मैथ्स में यूज करते हैं हेड एंड फुटर, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं ना एनडी, तो एनडी कहाँ पे चलता है, हेड पे चलता है, बराबर है. एंड फुटर में हम अगर लिखना चल रहे हैं पाए, क्या होगा इसको, नीचे होता है. हाँ, तो ऐसे ऐसा अगर सुपर अगर हम करते हैं ना तो हेड पे दिखेगा वो कैरेक्टर्स, एंड अगर सब करते हैं तो क्या चला जाएगा, नीचे दिखेगा बेस बेस बेस, बेस बोलते हैं और ऊपर हेड बोलते हैं, पावर होता है. हाँ पावर पावर, ओके, नीचे बेस, ओके, बेस एंड पावर. Then next, after all, we have to come back, go on the basic setting. Basic setting में जाके हमें default paragraph का नाम बताना पड़ेगा. This is a default paragraph and page name. Just save it. Check and activate once you're done. You can do test. Okay, printing टेस्ट में कुछ एरर नहीं है, सब कुछ सही जा रहा है. So after the designing, we have to come back and driver program. Yes, it's 38. Write a code. अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है कि इनवॉइस के डिटेल्स हमें शो करना है. इनवॉइस के टेबल्स हमें पता है क्या, इनवॉइस किस टाइप के इनवॉइस है, कस्टमर इनवॉइस, वेंडर इनवॉइस. तो इनवॉइस के टेबल्स आपको मैंने बताया है ना. साइली, आई एम आस्किंग यू. For say sales invoice. टेबल, हाँ, सेल्स इनवॉइस टेबल्स आई एम आस्किंग यू. So this is the PPT and sorry, PDF and Excel sheet where I have given T codes and tables. So these are tables there. Invoice details will be there. So BKPF, BSEG, BKPF, header details are there. Select fields first of all, which fields you want to be displayed. Here.
First, and to display the account number, date, और हमने क्या डिसाइड किया था, क्या डिस्प्ले, हाँ एड्रेस, नहीं ये भी है, It was barcode, sir. हाँ नंबर, डेट एंड बारकोड। बारकोड में तो ये नंबर दिखाएंगे बारकोड फॉर्मेट में। और कुछ फील्ड्स दिखा सकते कि देख लेंगे अपन। हाँ BLERT दिखाएंगे इसमें। रिसिप्ट डेट,
यहाँ पे जो इनवॉइस जो रिसिप्ट है इसके हम बिलिंग का जो डेटा है ना वो यूज कर लेंगे, क्योंकि इसमें आइटम डिटेल्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीबीआर के वीबीआरपी जो दो टेबल्स हैं, जैसे आपको एक सीक्वेंस मैंने बताया था ना कि वीबीए के वीबीएपी हेडर आइटम टेबल सेल्स ऑर्डर, एलआईपीएस एंड एलआईकेपी ये डिलीवरी डिटेल्स है, शिपिंग डिलीवरी, एंड लास्ट है वीबीआरके एंड वीबीआरपी एक बिलिंग डिटेल्स है। ठीक है, इनवाइस अगर हमें चाहिए, इनवाइस का डिटेल्स अगर चाहिए तो उसमें इनवाइस एंड रिसिप्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पूरा, आइटम डिस्क्रिप्शन मटेरियल कस्टमर डिटेल्स ये मुझे पूरा मिल नहीं जाएगा उसमें। सो हमें ऐसा चाहिए कि कस्टमर का डिटेल्स भी चाहिए, तो कस्टमर का डिटेल्स आरके में वीबी आरके ये जो टेबल है इस टेबल में जाके अपन देखते हैं। तो ये जो है कस्टमर का जो फील्ड है, कस्टमर के यो जैसे हमने शिपिंग में भी देखा था ना, वहां पे भी डेटा है एल आई के पी करके जो टेबल है, तो उसमें भी आपको कुंदन मिलता है, राइट। सो शिप टू पार्टी एंड वीपी ए के में अगर जाते हो तो सेल्स सेम कस्टमर ही उसके रोल चेंज हो जाते हैं, राइट। फर्स्ट फील्ड आपको देखना है। हम्म? अगर आपको ध्यान में रखना है तो जैसे बिलिंग का डिटेल्स, just a minute, I will show you how you can VBAK, VBAP, second LIPS, LIKP, LIPS, okay. मेन जो मास्टर्स है ये है कस्टमर एंड सेकंड है मटेरियल एंड कंपनी, कंपनी मास्टर also there. सेल्स ऑर्डर का इंफॉर्मेशन अगर चाहिए कस्टमर का, तो यू हैव टू कम हियर विथ VPAK एंड VPAP। तो इससे मुझे इन दोनों टेबल्स मुझे सेल्स का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसी कस्टमर का शिपिंग का डिटेल्स अगर चाहिए तो LIKP LIPS मिल जाएगा। ठीक है, बिलिंग का डिटेल्स चाहिए तो VBRK VBRK मिल जाएगा। ठीक है, एंड जो इनवाइस का जो इन्फॉर्मेशन है, ओके, इनवाइस में आइटम डिटेल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, VBRP से मुझे डिटेल मिल जाएगा। तो ये टेबल जो है BKP BAC जो दो टेबल्स हैं, तो इनवाइस के डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे। बिलिंग इनवाइस वो रिलेशन होता है EFI के साथ। ये कौन सा मॉडल है? SD का मॉडल है। तो ये इनवाइसिंग में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अकाउंट रिसेबल, दूसरा है अकाउंट पेएबल। ठीक है, ये रिलेटेड टू द SD मॉडल, MM मॉडल, एंड दिस इज रिलेटेड टू द SD मॉडल, अकाउंट रिसेबल। ठीक है, ये जब इनवाइस बनेगा, बिलिंग ये जब हमने कस्टमर को ऑर्डर हमने शिप किया, दे दिया, बिलिंग बन गया है, 1000 रुपीज उसका कॉस्ट है, तो पे करेगा ना और रिसिप्ट जनरेट होगा। होने के बाद, रिसिप्ट जनरेट होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे से हो जाएगा। कौन सा आइटम है, रिसिप्ट पे वो कुछ नहीं लिखते हैं ना, आइटम डिटेल्स। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको किस चीज में मिलेगा, VBR के VBR में मिल सकता है। अभी आप दोनों टेबल चेक करके देख ले कहाँ पे किस डेट का किसका डेटा सेव है। तो दिस इज FI मॉडल। आइटम का डेटा अगर आप को चाहिए तो कौन सा टेबल है? MSEG, MKPF एंड MSEG, ये दो टेबल्स हैं। इनवर्ड एंड आउटवर्ड, मिगो एंड मायरो, ये दो ट्रांजेक्शन हैं MM में, राइट। सो वहां पे हम जो डेटा इन करते हैं, डेटा भेज रहे हैं, जो हम परचेस करके ले रहे हैं स्टॉक में, इसको स्टोर कर रहे हैं,
प्रोडक्शन को दे रहे, प्रोडक्शन वाला क्या कर रहा है, यू उसको प्रोडक्ट बना रहा है, उसके बाद उसको सेल करना है, कौन करेगा, एसडी वाले करेगा, तो वो डेटा एफजी बन जाता है। एफजी मीन्स फिनिश गुड, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड एंड सेमी फिनिश। ये सब चीजें मास्टर सम कहाँ पे बनाते हैं, MM01 में बनाते हैं। उसका जो डेटा है मटेरियल का डेटा, आपको अगर उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस टेबल में जाके आप चेक कर सकते हैं। MARA, मारा, मार्डी, मार्सी, MAKT, MAST, ये जो टेबल्स है ना सब, इतने सारे टेबल्स हैं के लिए, जिसमें मास्टर डेटा, स्टोर लोकेशन, प्लांट, सेल्स डेटा, बिल ऑफ मटेरियल, मतलब ये है पीपी के रिलेवेंट। अगर बिल ऑफ मटेरियल का डेटा चाहिए आपको MAST, तो ये टेबल में मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए MAKT में चाहिए, ठीक है। सो ये सब बनते हैं MM0123 कोड से, मतलब तीनों टाइप के जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश एंड फिनिश कोड, सब चीजें एक ही टी कोड से बनता है। वहां पे बस व्यू अलग अलग सिलेक्ट करता है। ओके, सो ये जॉब किसका है, टू क्रिएट दी मटेरियल एंड ऑल, किसका जॉब है, MM कंसल्टेंट, PP कंसल्टेंट, SD कंसल्टेंट। दे विल सिलेक्ट देयर ओन व्यूज, डिफॉल्ट बेसिक डेटा एंड वन, ये आपको सिलेक्ट करना ही है, बट परचेसिंग टेक्स्ट, परचेस ऑर्डर टेक्स्ट, ये वाले सिलेक्ट करेंगे। और आपको सेल्स पे करना है तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन चैनल के जो 4 व्यूज है वो आप सिलेक्ट करें। तो ये है टी कोड्स एंड टेबल्स। ये आपको समझ आ गया एग्जैक्टली एसडी का जो डेटा है किस तरह से लिख के। इफ यू वांट डेटा डिलीवरी तो ये डेटा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेंगे, सेल्स ऑर्डर एंड बिलिंग डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा वीपीआर के साथ। तो विल डू सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम वीपीआर के से फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। बिलिंग डिटेल्स हम देख रहे हैं, सेल्स डॉक्यूमेंट, बिलिंग, then WH, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का, हाँ, VKORG, VKORG। जैसे MM में प्लांट एंड स्टोर लोकेशन होता है, वैसे सेल्स में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये इसके हायरार्की है। VTWG के, हाँ, ओके, एंड डेट, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाते हैं कस्टमर की डिटेल्स, KUNREG, कस्टमर के टेबल में जाके कस्टमर के कुछ फील्ड सेलेक्ट करेंगे, नेम 1, WRT01 and postal code, that's it। सेल्स इंफॉर्मेशन, कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड आइटम इंफॉर्मेशन। आइटम हमें चाहिए RP, बिलिंग है, आइटम नंबर, फॉर्चुनर, टेक्स्ट, ERKTX, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए तो MAKT में जाके आपको लाना पड़ेगा। अभी बस हम सेल्स टेक्स्ट ले रहे हैं आपसे। क्वांटिटी इन यूनिट, यूनिट,
price, NATWR, okay, data element इसके change है, ठीक है। ओके, सो ये तो फील्ड्स हमें मिल गए, सो विल डू क्रिएट फर्स्ट, include ZST, FKDA, ठीक है, कंफ्यूजन है, visualization tables, VKNAM, VVRK, picking up event, Yeah, I did end of the
यहाँ पे कुछ हम यूजिंग लिंक ठीक है, क्योंकि हमें जो दिखाना है name one what is 01 PSTL said name one is 015 what is 01 PSTL said 5 PST said end of T1 यहाँ पे तो यहाँ पे पर्सनल पर्सनल ARKTX KMG unit unit price data element personal data element personal VF not T1 PRP within VA sales document within VA no VF चाहिए आप spelling document next is VTWG distribution channel sales organization yes the next is date billing date then Kunal master data customer number customer name one more field we need to add that is customer number KUNREG KUNREG अब यहाँ पे हमें बिलिंग का हेडर डिटेल मिल जाएगा कस्टमर का हेडर डिटेल्स नेम इज फाइन नेम वन GP नेम और T01 PSTL set postal code and these items personal sales text unit quantity sales unit price क्लास हाँ सुरत तिकडे काय आहे? हाँ let's get the data internal table IT TYBBRK type table of TYBBRK ITBBRP type table of TYBBRP IT KNM type table of
TY work area internal table work area is not as select option. So I mean selection screen we have to create selection screen begin of block v1 with frame title text. Now we have to use the parameters because only one number will take billing document number and based on we'll give print on that. So range हम report में देते हैं यहाँ पे बिलिंग नंबर रहेगा बिल नंबर 366 और type which table we used VBRK VLN close this selection screen and now just save it, check, activate. Is this clear, Siley? Any doubts? Yes, sir, clear. Next we have to do actual logic. Let's create this LG logic section. Come back. Startup selection. Then we have to do first perform open session. Perform get data. Perform write data. This is anything you can give it. Okay, इसके नाम कुछ भी हो सकता है. Perform close session. Actual function model we have to write within that in open session and all. We have to call here function model. First is open form function model. What does it? It's open a session. We have to just say name of form. You can write a static name. Yes, why? Or dynamically, if you want, you can write yes, yes. Next is get data. The get data, what we have to do? Fetch data from first database table. Yeah. Select single. अभी single record ही चाहिए. यहाँ पे हमें single record ही display करना है. This section, this section. Here are multiple records. Okay. So what we have to do? Get first single record. Select single. Which fields we used? We have used the Vblin VTAWG. We have to fetch this all. Vblin VTWG, divisions, sales organization, WikiOrg. The next is date and customer from VBRK into corresponding fields of table IT VBRK. After this, where Vblin VBELN
equal to bill number. Here we have to use work area. When we use single, we must get in this work area only. After this, if WABBRK is not initial, and if this is executed, then only will execute next statement. Get customer data. Select single owner name one not zero PSTN. Only 4 fields. From KN1 and to corresponding fields of table work area KN, where owner is equal to कौन सा कस्टमर नंबर, हम तो एक ही सिंगल इनपुट ले रहे हैं ना, क्या लिखना पड़ेगा साइली? CNO. वेल सीएनओ ने नहीं दिया है ना। ये जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हमें मिलता है KUNREG. सो KUNREG इट्स अ कस्टमर एक्चुअली, ठीक है। तो ये कस्टमर हमें कहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे WA सिंगल रिकॉर्ड है ना, WABBRK डैश KUNRG। तो इस वर्क एरिया में जो कस्टमर का फील्ड रहेगा, तो हम आसान करें कस्टमर नंबर, तो उससे हमें कस्टमर का डिटेल्स मिल जाएगा। So बिल्लों के आगे विभिन्न आएगा ना, where the plan is supposed to बिल्लों and then dash विभिन्न, बिल्लों के बाद dash विभिन्न आएगा नहीं, बिल नंबर ये हमने पैरामीटर्स का नाम दिया, ठीक है। सो वट एवर वैल्यू यूजर विल गिव इट, this will be hold here in this bill number. So this bill number we have to pass it in the where condition. So हमने अगर ये 1000 लिखा है तो 1000 ये इसको पास करेगा, इससे वो डेटा फेच करके लाएगा वर्क एरिया में सिंगल रिकॉर्ड में। ओके, इसका वैल्यू इसका सबका वैल्यू रहेगा यहाँ पे। अब हमें चाहिए तो कस्टमर का डिटेल्स अगर चाहिए तो ये दोनों टेबल हम कनेक्ट करके, मतलब VBRK एंड कस्टमर का टेबल हम ज्वाइन करेंगे, उससे हमें डेटा मिल जाएगा इन फील्ड का। वी हैव टू स्टोर इन दिस WAKN1। आइटम डेटा अगर हमें चाहिए, आइटम डेटा चेक WABBRK इज नॉट इनिशियल। अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो चुका है तो ही यहाँ पे इस विबलिन में डेटा आया रहेगा, राइट। सो हम ये चेक कर रहे हैं कि इसमें डेटा आया है क्या, यस इट इज देयर। देन fetch item data, select all fields, Fosner ARKTX, FKIMG, VRKMV, VBRP, right, and to corresponding fields of table, then IT VBRP, where Biblin is equal to, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, VBRK में जो एक फील्ड है बिबलिन करके, इसमें वो नंबर आया रहेगा, वो नंबर यहाँ पे हम पास कर सकते हैं, ए भी पास कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन गिव दिस कि दोनों यहाँ पे बिल नंबर सेम ही है। बिल नंबर वो रहेगा तो डेटा उसमें आया रहेगा। तो यहाँ हमें वर्क एरिया में और इंटर टेबल में डेटा मिल चुका है। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट this data, write data
So we have to call right form. एड्रेस एक हमें लाना पड़ेगा और एक ओके और एक हमें एड्रेस लाना पड़ेगा। एड्रेस कहाँ से मिलेगा? कस्टमर के टेबल में कस्टमर का एड्रेस चाहिए या शिपिंग बिलिंग का चाहिए? शिपिंग बिलिंग का चाहिए। वीबीआरके में जाते हैं। इसमें दो चीजें हैं। कस्टमर का एड्रेस जो है एडीआरसी में मिलेगा। शिपिंग का अगर डिटेल चाहिए तो वीबीआरके में मिल जाएगा। वीबीआरके में यस, यहीं पे मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि शिपिंग एड्रेस एंड बिलिंग एड्रेस दोनों का डिफरेंस बताओ। शिपिंग एंड डिलीवरी जहाँ पे जाके हमें शिप करना है, और कस्टमर का एड्रेस रहेगा तो यहीं पे हम दिखा सकते हैं फर्स्ट सेक्शन में सोल्ड टू पार्टी में। वो एडीआर नंबर जो आता है उससे हमें वो डिटेल्स मिल जाएगा। अब हम कस्टमर सेल्स डिस्ट्रिक्ट दो तीन अपन टेस्ट लेते हैं।
ओके, कि तो ये शिपिंग का डिटेल्स मिल जाएगा। दूसरा जो चीज़ है, मैं आपको कस्टमर का एड्रेस अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कस्टमर के टेबल में एक फील्ड होता है एडीआर नंबर करके। ये जो एडीआर नंबर है, ये एड्रेस लेके, दिस अ नंबर, इट्स नॉट एड्रेस एक्चुअली, वी हैव टू गो इन एडीआरसी टेबल। तो एडीआरसी के टेबल में ये डिटेल मिलता है, एड्रेस डिटेल्स, कस्टमर, वेंडर, एम्प्लॉई, ये जो डिटेल्स होते हैं, ये सब डिटेल्स यहाँ पे होते हैं। ये चाहिए ना, स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4, बिल्डिंग, फ्लोर, रूम, ये सब चीजें होते हैं। पर्सनल डिटेल्स, अगर पर्सनल नंबर डालते हो, पर्सनल नंबर किसको होता है, एम्प्लॉय को होता है। बिजनेस एड्रेस होता है, बिजनेस को बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये ऐसे कुछ नहीं रहता है। तो ये जो और ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय के नंबर से, एम्प्लॉय अगर रहेगा तो पर्सनल नंबर रहता है एडिशनली, ऑर्गेनाइजेशन अगर रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन नंबर रहता है। तो उससे हम ये डिटेल्स फेच कर सकते हैं पूरी एड्रेस डिटेल्स इस टेबल में आके। तो स्मार्टफोन में वो एड्रेस हम पेज करके वहां पे दिखाएंगे। अगर आपको यहाँ पे भी करना है, सो अगेन वन मोर थिंग यू हैव टू डू इट, यू हैव टू क्रिएट वन मोर स्ट्रक्चर एडीआरसी के लिए। एडीआरसी की जो फील्ड है चाहिए तो उसमें डालना पड़ेगा, और यहाँ पे एड्रेस नंबर भी डालना पड़ेगा, एडीआर नंबर टाइप एडीआर नंबर लेना पड़ेगा। तो वो उस टेबल पे जाके उसका रिलेशन बना के उसका सिंगल रिकॉर्ड फेच करके ला सकते हैं। सो फील्ड्स मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करने पड़ेंगे अब। लैंड ऑन विजिट, हाँ यार की चेक, एक वेरिएंस में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, कितने विंडोज बनाना पड़ेगा, वन। ओके, ये भी है सेल्स शो टू पट, यहाँ पे कस्टमर का डेटा दिखाएंगे, और यहाँ पे हम खाली बारकोड दिखाएंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दिस ऑल इनवॉइस नंबर बारकोड दिखाएंगे। नहीं, नहीं, नंबर ऑफ फील्ड्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस पे 8 फील्ड्स दिखाएंगे। सोल्ड टू पार्टी में कितने, 4 हैं, तो ये यहाँ पे दिखाएंगे। ये वाला सेक्शन हटा देंगे अपन, शिपिंग वाला, क्योंकि हम ऊपर भी ले रहे हैं उसको सब चीजें, आइटम डिटेल्स नीचे दिखाएंगे। जस्ट सेट, totally we have to call 3 right form, first, second, the last one, 3. Okay, let's implement first. थर्ड राइट फॉर्म में सारे ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। So let's implement first window name,
AC71, change. What is the window? कंपनी एड्रेस नहीं, एड्रेस है एड्रेस कस्टमर इनवाइट, कस्टमर इनवाइस, कस्टमर विंडो सेकंड है एलिमेंट का विंडो का नाम सेम दे रहे हैं। सेकंड ये लिखना है फर्स्ट इसमें सेकंड है इनवाइस एलिमेंट नेम एंड विंडो नेम आर सेम। एंड थर्ड है मेन, ये मेन। तो मेन में जब हम डेटा दिखाना चाहते हैं, वी हैव टू यूज दिस इज द मेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कॉल द मेन। सेट फंक्शन का नाम सेट है, टाइप बॉडी एंड द मेन। सो वैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, आइटम डेटा दिखा रहा है। सो मल्टीपल डेटा इज देयर, इंटर टेबल में डेटा है वो अगर हम एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे हमें लूप डालना पड़ेगा, उसको डेटा देखिए, ठीक है। सो वन बाय वन विल वेट। आइटम डेटा का पे आई टू बी आती डब्ल्यू मैसेज। कस्टमर इंफॉर्मेशन, इनवॉइस इंफॉर्मेशन एंड मेन आइटम डेटा। अब जो डेटा अपने पास है आई टी बी बी आर पी और डब्ल्यू बी एफ आर में write data. Then last one, close session. Then just we have to call the function model. No need to pass any parameters. Close form. Close. जैसे सेशन ओपन हुआ है वैसे क्लोज भी निकल गया। मेन एक्चुअल चीज कहाँ पे है, यहाँ पे है। राइट डेटा, राइट फॉर्म, फर्स्ट राइट फॉर्म, सेकंड राइट फॉर्म, थर्ड राइट फॉर्म, और इसमें अलग अलग विंडोज में हमें डेटा दिखाना है। सेव इट। Okay, so just check the records. डेटाबेस के टेबल में से डेटा फेच होके एग्जीक्यूट होके आ रहा है कि नहीं हम चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हेडर एक्टिवेट किया, सेकंड इंक्लूड एक्टिवेट किया, स्क्रिप्ट एंड मेन प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया। अब हम सेट ब्रेक पॉइंट करेंगे, सिलेक्ट यहाँ पे
Let's execute it. This is a billing document number. Oh, okay. डेटा आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिखने के बाद ऐसी 71 में जाके उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। हमने तो अभी डेटाबेस से डेटा फेच करके लाया हुआ है। सो व्हाइल showing the data out there, whatever the errors are come, so we'll just resolve that. So conceptually, I hope you understood about all. Now only one part is remain, that is want to display the values. Okay, on the layouts, how I have to do, we have to write the text element. टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर हमें कोड लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे पेज विंडोज में, टी टैक्स टाइटल लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट ऑप्शन है, क्लिक करना है। पैराग्राफ्स के सारे नाम से यहाँ पे दिख जाएंगे। मुझे यूज करना है दीज आर द पैराग्राफ्स एंड डिफॉल्ट आल्सो देयर स्टार। ठीक है, अगर अपने कुछ भी नहीं बनाया तो स्टार भी होता है। मुझे यूज करना है टेबल हेडर, कंपनी का नाम यहाँ पे लिखते हैं डेल। इसका मार्जिन अगर सेंटर पे दिया है तो ऑटोमेटिक सेंटर पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद है एड्रेस, कंपनी, कस्टमर, टेक्स्ट एलिमेंट। एक 2 मिनट हम ब्रेक लेते हैं, देन विल कंटिन्यू द सेशंस। ठीक है साइली? Okay, sir.